Dear student, yesterday we have learnt the science first lesson growing plants, the subtopic reproduction from seeds. But today we are going to learn the plants reproduction from other parts. Some plants reproduction from their other parts. Plants can sometimes arise from the body parts of the present plant. This process of reproduction by which a plant reproduced from its uh, reproduced from its body part like root, stem, etc. It is called vegetative reproduction. Vegetative reproduction. Some plants reproduce from the other parts like stem and roots. Its process called vegetative reproduction. Reproduction from stems. Some plants can grow from stems. A piece of stem carrying buds from the mother plant is cut and planted in the soil. This is called stem cutting. Each stem then grows into a new plant. For example, sugarcane, hibiscus, and rose plant. Some plants can grow सम प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम स्टीम. कुछ प्लांट्स स्टीम से ग्रो करते हैं. उनकी स्टीम अगर हम ज़मीन में लगाएंगे, सॉइल में लगाएंगे तो वहाँ से नई प्लांट ग्रो करती है. और पीस ऑफ स्टीम, स्टीम का एक पीस या टुकड़ा हम कैरिंग करेंगे बर्ड में. फ्रॉम द मदर प्लांट इज़ कट. अगर वो मदर प्लांट से हम कट किया तो क्या होगा वो, और उसे हम प्लांट करेंगे सॉइल में. दिस इज़ इस प्रोसेस को दिस इज कॉल्ड स्टीम कटिंग. इसे कहते हैं स्टीम कटिंग. ईच स्टीम एंड देन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. हर एक स्टीम जो होती है वो न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं. फॉर एग्जांपल शुगर केन, हिबिस्कस एंड रोज. इन ट्री के जो प्लांट स्टीम होते हैं उस स्टीम से नई ट्री ग्रो करती है. वी कैन सी इन दिस पिक्चर द rose plant by stem cutting process. First picture, the person is cutting the trees, rose trees stem. After cutting the stem, he planted the stem in soil. After planted the stem, the new rose tree growing in the second picture. The second picture में वो new rose tree growing हो रही है. And third picture, the rose tree completely growing up. तो रोज इस पिक्चर में देखो, फर्स्ट पिक्चर में वो उसने रोज ट्री कट किया है, स्टीम कट किए, और उस सेकंड पिक्चर में उस स्टीम को प्लांट किया है, और थर्ड पिक्चर में वो रोज ट्री कम्प्लीटली ग्रो हुई है, रिप्रोडक्ट हुआ है. Some underground stem have small buds on them. When they are planted in the soil, new shoots grow out from the buds. For example, potato and ginger. Some underground stem. कुछ अंडरग्राउंड स्टीम होते हैं. कौन कौन से स्टीम होते हैं? पोटैटो स्टीम है, जिंजर अंडरग्राउंड स्टीम है. ये अंडरग्राउंड होते हैं और वो ये क्या है? पोटैटो और जिंजर स्टीम है. इनके ऊपर क्या होते हैं? स्मॉल बर्ड्स होते हैं, और उस बर्ड्स से क्या होते हैं? वो वहाँ से न्यू प्लांट ग्रोइंग करती है. दे प्लांटेड इन द सॉइल. अगर हमने पोटैटो और जिंजर सॉइल में प्लांट किया तो क्या होगा? न्यू शूट्स ग्रो. वहाँ से न्यू शूट्स ग्रो होते हैं आउट फ्रॉम द बर्ड्स. जो आपको पिक्चर में बर्ड्स दिख रहे हैं, पोटैटो पर बर्ड्स दिख रहे हैं, वहाँ से न्यू शूट्स ग्रो करते हैं. पोटैटो और जिंजर क्या है? स्टीम है, और स्टीम से न्यू प्लांट ग्रो करती है. नेक्स्ट रिप्रोडक्शन सिस्टम इज reproduction from roots. Some trees hatch reproduce from their roots. A new plants can also grow from the roots of the mother plant in plants like sweet potato, radish, turnip, beetroot and dahlia. इसके पहले हमने लर्न किया है सम प्लांट्स reproduce from seeds.
After that, some plants reproduction from other parts like stem and roots. Reproduction from stem, uh, hibiscus, sugarcane, and rose, as well as potato and ginger. These plants reproduction from their stems. After that, some plants reproduce from their roots. For example, sweet potato, radish and turnip, beetroot and dahlia. These plants reproduce from their mother plant's roots. अगर उस प्लांट्स के रूट हमने सॉइल में लगाए तो न्यू प्लांट ग्रो करती है. The next topic is reproduction from leaves and spores. Next reproduction system is reproduction from leaves and spores. Leaves of certain plants produce buds along their margins. New plants grow from these leaves if these are placed in moist soil. For example, bryophyllum leaves. In first picture we can see bryophyllum seeds, leaves. These leaves, if we plant in the moist soil, after that new plant grow in this soil. अगर इस प्लांट्स की लीव्स हमने सॉइल में लगाई तो न्यू प्लांट ग्रो करती है. सेकेंड पिक्चर्स, देज आर फर्न्स विथ स्पोर्स. फर्न्स ट्री है, उसके लीव्स पर स्पोर्स आए हैं, पोर्स. ये स्पोर्स जो है उससे न्यू ट्री ग्रो करती है. Some plants have facial structure called spores, which gives rise to new plants. These plants do not bear flowers or seeds. For example, mushrooms, ferns and mosses. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी फेशियल स्ट्रक्चर होते हैं, उसे कहते हैं पोर्स. जो पोर्स स्ट्रक्चर होता है उस पोर्स स्ट्रक्चर से न्यू प्लांट राइज होती है. दिस प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स. ऐसे प्लांट्स को फ्लावर्स नहीं आते और सीड्स भी नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल मशरूम, फर्न्स एंड मॉसेस. आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं फर्न्स की पिक्चर दिख रही है यहाँ पर, और उस फर्न्स की पिक्चर पर ऊपर पोर्स आए हैं. इस पोर्स से न्यू ट्री प्लांट होती है, ग्रो होती है. Here given some questions to you. State true or false for the given statement. जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. ऑल प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, बट this sentence is false sentence. Why? Because some plants reproduce from seeds, some plants reproduce from their stems, and some plants reproduce from their roots, as well as some plants reproduce from their leaves. That why all plants reproduce through seeds. We cannot say that. That why this first sentence is false. Second sentence is, a stem cutting of rose can give rise to a new plant. True. This sentence is true. Why? Because the rose tree is plant growing tree. अगर हमने रोज ट्री इज स्टेम ग्रोइंग ट्री है, स्टेम से रिप्रोड्यूस होने वाली ट्री है. That why if we planting a stem of rose tree, this stem growing new plant. This sentence is true. Next sentence, plants like sweet potato cannot reproduce at all. False. Why? Because sweet potato is root and this root reproduce new plant. That why plants like sweet potato cannot reproduce it all. This sentence is false. Next, spores and flowers can be found on ferns. Ferns tree पर spores और flowers
दिखाई देते हैं। आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर सेकंड पिक्चर में है फर्न्स ट्री। इसके ऊपर सिर्फ पोर्स है, फ्लावर्स नहीं है। इस फर्न्स ट्री को फ्लावर्स नहीं आते। बट दिस फोर्थ सेंटेंस सेज द पोर्स एंड फ्लावर्स कैन बी फाउंड ऑन फर्न्स। फर्न्स ट्री पर पोर्स एंड फ्लावर्स हम देख सकते हैं। फर्न्स ट्री पर हम पोर्स देख सकते हैं पर फ्लावर्स नहीं देख सकते। दिस सेंटेंस आल्सो फॉल्स। So, my dear students, tomorrow's next lecture we will learn about crops, types of crops, healthy crops, crops protection, as well as storage of crops. That why today's lecture is finished. So, learn properly and read this lesson again.